welcome or welcome back to my channel. I hope all of you are doing good and great and staying safe at your home. And for today's video I'm gonna create this look by Sarah Sarosh, जो उन्होंने अभी 2021 के लास्ट वीडियो में किया है, जहाँ पे वो एक संगीत में जा रही थी और उन्होंने उसके लिए ये लुक क्रिएट किया था, जो कि बहुत ही सिंपल स्मोकी आई लुक उन्होंने किया है. सो एंड व्हेन इट कम्स टू मेकअप, we all know she is absolutely pro when it comes to makeup, but I am not a pro. मैं beginner हूँ, so don't judge me. सिर्फ try करने वाली हूँ. I hope मैं 7 out of 10 जितना तो हो जाएगा तो भी happy. So and if you are new to my channel, then hi, my name is Hulshita Sharma. I create makeup videos on this channel and also vlogs आने वाला है. सो विद दिस लॉन्ग इंट्रोडक्शन जल्दी से शुरू करते हैं. So before starting any makeup, I'm going with this Nutriderm moisturizing lotion vitamin E. This moisturizer is really nice and it has a very nice light formula, and because I'm from dry skin type, I need a really good moisturizing lotion. And even if you are from oily skin type family, you should always go with moisturizing lotion underneath your makeup. And now I'm going with this नायका काजल पेंसिल, ब्लैक काजल पेंसिल, क्योंकि जब मैंने सारा सरोज का वीडियो देखा था, उन्होंने सबसे पहले अपने आईज का मेकअप शुरू किया था, जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ. अभी तक तो मैं सबसे पहले फेस मेकअप करती हूँ एंड देन मैं अपने आईज का मेकअप करती हूँ, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने आईज का मेकअप किया था. तो और उसके लिए उन्होंने जेल आईलाइनर यूज़ किया था, बट आई एम यूजिंग दिस काजल, क्योंकि जो जेल आईलाइनर मेरे पास है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और उसको स्मज करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है. सो आई एम यूजिंग दिस काजल पेंसिल फ्रॉम नायका, एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. दिस इज नॉट टू स्मज द आईलाइनर, बट आई एम यूजिंग दिस टू स्मज माई आईलाइनर. आई एम स्मजिंग माई आईलाइनर और उसको मैं अपने क्रीज तक थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते हुए लेके जा रही हूँ. बिल्कुल क्रीज तक नहीं लेके जाना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करना है. बस जो हार्श एजेस हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर देना. और उसके बाद मैं ये छोटी फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. आई एम यूजिंग दिस ब्रश टू ब्लेंड माई काजल really well. I'm blending my right eye first, and then I'm gonna dive onto my left eye. Blend your kajal or eyeliner, whatever you're using, properly to make this eye look. And now I'm again going with this kajal pencil, because मेरा जो काजल है वो पूरी तरह से ब्लेंड हो गया था, तो एक लाइनर वाली शेप पूरी तरह से चली गई थी. तो आई एम अगेन गोइंग विद दिस आईलाइनर, एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस लिटिल फ्लफी ब्रश टू ब्लेंड द एजेस. सिर्फ एजेस को स्मच करना है, उसके अलावा पहले की तरह उसको पूरा नहीं करना है, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर स्मोकी आई लुक बट विद आईलाइनर. सो एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस big fluffy brush from Cuffs and Lashes, and I'm using the eyeshadow palette from Swiss Beauty 9 eyeshadow palette, mixing two colors from this eyeshadow palette, mid brown and the lightest skin color this palette has. और इसको अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर देना है, एंड ट्राई टू ब्लेंड दिस शेड विद योर आईलाइनर ऑल्सो, तो उससे कोई भी हार्श एजेस नहीं दिखेंगे. और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में आई एम गोइंग अगेन विद द काजल पेंसिल मेरे आईज के वाटर लाइंस पे फिल करने के लिए, क्योंकि सारा सरोश ने भी अपने स्मोकी आई लुक को कंप्लीट करने के लिए काजल का यूज़ किया था. सो वी आर ऑल्सो गोइंग विद द काजल पेंसिल, द सेम काजल पेंसिल आई हैव फ्रॉम नायका. एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा ऑन माई लैशेज. सारा सरोश ने उन्होंने अपने आई लैशेज पे कोई भी फॉल्स आईलैशेस का यूज़ नहीं किया था. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा फ्रॉम मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, और बहुत एक अच्छा सा कोट लगा लूँगी. आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम शुगर, और ये जो प्राइमर है वो सिलिकॉन बेस्ड है. सो मैं इसको अपने, वैसे आई एम फ्रॉम ड्राई स्किन टाइप, सो आई डोंट रियली हैव बिग पोर्स, बट स्टिल आई हैव लिटिल पोर्स. सो अपने पोर्स को ब्लर करने के लिए मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ, और जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर देना है अच्छे से. सो इट विल मेक योर फेस लुक really स्मूथ. एंड
उसके बाद में आप फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाएगा. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन फ्रॉम फेसेस कैनेडा. आई एम इन द शेड बेज. सो अब मैं इसको पूरे फेस पे डॉट्स लगाकर और फिर यूज़ कर रही हूँ. सो मेरा जो फॉरहेड है वो कुछ ज़्यादा ही टेंड, सो इट्स लुकिंग रियली लाइट ऑन माई फॉरहेड. बट अब but it is my shade. So now I'm going to use the foundation brush from Cuffs and Lashes. और इस फाउंडेशन ब्रश से मैं अपना पूरा जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लूँगी. एंड देन आई एम गोना गो विद माई ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक जो फिनिश ब्यूटी ब्लेंडर से आती है वो ब्रश से नहीं आती है. आई एम यूजिंग दिस ब्रश फर्स्टली बिकॉज brushes are really fast. Brushes do their work really fast, and beauty blender is a little slow, so I'm using this brush first from Cuffs and Lashes. Now I'm going with my beauty blender. I'm going with a very light hand. You really need to poke it into your skin, so go with a very light hand. And now I'm done with my foundations. So moving on to concealer, so I'm using this LA Girl Pro Concealer HD High Definition Concealer. So actually this concealer is really nice. It has a medium coverage, but the applicator is not at all good. इस एप्लीकेटर से प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू कैन कंट्रोल द एप्लीकेटर. उससे वो अपने हिसाब से निकाल देता है. यू हैव टू स्क्वीज द ट्यूब और फिर वो जो एप्लीकेटर है वो उस पर अपने हिसाब से निकल जाता है. तो एप्लीकेटर इज़ नॉट गुड. जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे कंसील करना चाहिए, आई डोंट कंसील माई फेस टू कवर अप एनीथिंग. आई एम जस्ट यूजिंग दिस टू हाईलाइट माई फेस. और अब मैं मेरे कंसीलर को ब्लेंड करूँगी इस ब्यूटी ब्लेंडर से. अगेन आई डोंट रियली लाइक कंसीलर ब्रशेज. आई हेट कंसीलर ब्रशेज. सो I'm using this beauty blender. And now I'm going with my mini blush from Sugar. This I forgot the shade name. I think it's peachy pink or something. But this shade is really nice. आप इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि it has a very natural nude और peachy finish. So you can use this blush on your daily basis also. So मैं ब्लशेस थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि ऑन कैमरा इट लुक्स फ्लैट. ये रियल में तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है अगर इसको मैं कैमरा के अकॉर्डिंग लगाऊंगी तो कैमरा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है. लेकिन डोंट यूज़ द अमाउंट आई हैव यूज्ड ऑन माई फेस, बिकॉज ये कैमरा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा है. बट आई एन्जॉय अप्लाइंग ब्लशेज़, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो मुझे चलेगा, क्योंकि ब्लश ये बहुत सटल होता है और ब्लश आधे एक घंटे के बाद में ऑलमोस्ट आधा ही हो जाता है. तो यूज़ अ लिटिल मोर. And after the blush, let's move on to highlighter. So I'm using this K Beauty Illuminating Highlighter in the shade Champagne Fizz. This shade is really nice. ये shade किसी भी undertone को सूट हो जाएगा. If you are from warmer undertone और cooler undertone, ये दोनों को सूट हो जाता है बहुत अच्छे से. So जब मैं इसको खरीद रही थी तो उस टाइम I selected this shade क्योंकि ये दोनों पे चला जाता है, because I was confused और मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी obviously. So I'm using this highlighter on high points of my face, on my cheekbones or Cupid's bow. And उसके बाद I'm using this setting spray from Faces Canada. I'm gonna damp my face into this setting spray, बिकॉज सेटिंग स्प्रे जो होता है वो मेकअप को बहुत अच्छे से मिक्स कर देता है, सारे मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर देता है. कोई भी हार्श एजेस नहीं रह जाते हैं और it will give you a very illuminating or dewy look. This setting spray is not that dewy, but it's not matte also. So after the setting spray, I'm using this brow pencil from Nykaa to fill my brows. So firstly I'm gonna line my brows थोड़ा ऊपर से भी और फिर नीचे से भी, and then I'm gonna fill them. It's in the shade brown. I don't like the black brow pencils because वो मेरे face को obviously suit भी नहीं करेगी. और I have brown hairs on my head and also on my brows. So दिस शेड सूट में परफेक्टली. और ज़्यादातर लोगों को ब्राउन शेड परफेक्टली सूट करता है क्योंकि ब्लैक बिल्कुल काजल के जैसे, ब्लैक लाइन के जैसे लगता है. सो आई रिकमेंड यू गाइज द ब्राउन शेड. और फिल करने के बाद में मैं अपने ब्राउज को ब्रश कर लूँगी विद द स्पूली.
So now I'm going with this Swiss Beauty lip liner. I'm lining my lips with this lip liner, and I'm gonna fill my lips with this lip liner only. I forgot the shade name, but I'm using this shade color. I mean, like a brown or brown nude sort of shade. It's a brown nude sort of shade. पर ये lip liner इतना अच्छा नहीं है. I would never recommend you this lip liner to you guys, because it's not soft at all. It's really hard on your lips, और ये बिल्कुल से भी अच्छे स्मूथली चलता भी नहीं है. It's really really hard. And now I think I'm done with my lips. हेयर बैंड को रिमूव कर देते हैं और बालों को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. So now I'm done with my makeup, and I am absolutely happy with my makeup, how my makeup turned out. I think I've done like a 6 out of 10 or 7 out of 10 job, because Sarah Sarosh, the great beauty content creator, उनके जैसे तो नहीं कर सकते, पर I think I've done 6 out of 10 or 7 out of 10. So if you like the video, then don't forget to hit the like button and comment down below, and also subscribe to my channel and share this video with all your friends and family. And I will meet you guys really very soon with my next upload. So bye.